So the functionaries, let me share with you the screen so that you will be able to recall the points what we covered in the last class. Just give me a second. मुझे अभी नहीं मिला. I'm not getting that word file in which I explained it to you. The functionaries, different functionaries. They are basically, let me do that thing. Just a second. Yeah, this is the functionaries. Yes. Beta, are you getting my screen? Students, are you getting my screen, bacha? No, ma'am. Yes, ma'am. Now it's visible. Okay. So the first one under this topic, that is functionaries under the code. Code here means criminal procedure code, right? The first body, the first functionary, that is the criminal code, which we have already covered in the last two classes, and their power, sentencing power also, right? And thereafter I explained it to you, that is who is a public prosecutor. So section 2U define the term public prosecutor. Public prosecutor in a criminal case, basically his job is to represent the interest of the state, and we all know in a welfare state, if the criminal case is against the name of the one of the parties, the state, right? So, but that does not mean that if the victim want to hire the service of a lawyer, then cannot do so. He has the authority to hire the service of a lawyer. ठीक है? And accused will also have the right to defend, right? So he will appoint the defense counsel. So that means the person, the counsel, the advocate who protects the interest of the accused or who represents the accused, he is known as the defense counsel, right? तो डिफेंस काउंसिल पे ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और आपको बता रही हूँ. इफ यू कैन रिकॉल section 304 of the CRPC, which talks about the legal aid, right? आप लोगों को याद है in ADR also ma'am taught you about the legal aid. Can any one of you tell me legal aid in civil matters or legal aid, what is the law under which it is provided? Any one of you? What is the name of that law which provide a list of the person who are entitled for free legal aid? Legal Services Authority Act. Yes, Legal Services Authorities Act 1987, right? Section 12 of this act provides the list of the person who are entitled for free legal aid, right? So same way beta, in CPC also there is a corresponding provision कि any person who is indigent, who is not able to hire the service of the lawyer or who is not able to represent, then he should be represented by the he should be entitled for free legal aid. That means he should get the services of a lawyer free of cost. उसकी फीस वगैरह उसे पे नहीं करना पड़ेगा. Same way court fee से relaxation होगा और any other charges से. Likewise, in CRPC also, in section 304, there is a provision that if a person is unable to hire the services or who is not able to afford
ठीक है, तो उसको जो है लीगल सर्विसेज मिलेगी, ठीक है, लीगल एड मिलेगा। ये मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम शोइंग यू द बेयर एक्ट एंड सेक्शन 304। ठीक है, ये देखो बेटा, सेक्शन 304 लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंसेस इन सर्टेन एक्सपेंसेस। आपको मेरा बेयर एक्ट विजिबल हो रहा है? आर यू गेटिंग माय बेयर एक्ट ऑन माय स्क्रीन? नो? अच्छा, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर वन सेकंड। Is it visible to you now? बेटा आप विजिबल है आप लोगों को? Chapter 24, this is the index, section 304, the marginal note, the heading in the content, in the index is legal aid It's to visible at, now. ठीक है, legal aid to accused at state expenses in certain cases. Right, so that means कि अगर in case if there is a person who is charged for an offense, so he is considered to be an accused, right? And if that person is an indigent person means who is not financially sound or who is from a poor section, or who is economically weaker, than that person according to section 304 of the CRPC has the right to get the free legal aid. राइट, अब मैं एक बारी आप लोगों के साथ 304 का शेयर कर रही हूँ। Legal aid to accused at state expense in certain cases. Where in a trial before the court of session, the accused is not represented by a pleader, and where it appear to the court that the accused has not sufficient means to engage a pleader, comma, the court shall assign a pleader for his defense at the expense of the state. So this is the purpose of telling you. That means कि according to the CRPC also, if there is a person who is indigent, who is economically not sound in a sense he cannot have sufficient means to hire the services of a lawyer, then it is the duty of the state to give him free legal aid and to give him a fair chance of defense on the state expense. ठीक है, तो ये बेटा डिफेंस काउंसिल का जो है, इसके लिए आपके पास सेक्शन 304 है। और डिफेंस काउंसिल क्या होता है, इसके लिए यू कैन सी सेक्शन 303। जस्ट अ सेकेंड, मैं दोबारा से एक सेकेंड, ये तो मैंने ये बताया आपको स्टेट पे। सेक्शन 303 क्या कहता है? राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom proceeding are instituted to be defended. Any person accused of an offense before a criminal court or against whom a proceeding are instituted under this code may of right be defended by a pleader of his choice. Okay, right? So that means he has a right to be defended by a pleader of his choice, right? So this is his right, right? And in a situation where the court find that the accused is not represented by a pleader, then it is the duty of the court to give him a pleader of his choice. Of his choice means obviously the person who are enlisted on the panel of the court ऑफ लीगल सर्विसेज, जो जहाँ पे लीगल एड का जो लिस्ट है, जो पर दी एडवोकेट्स हु आर एनरोल्ड फॉर लीगल एड, ठीक है, आउट ऑफ दैट लिस्ट दैट पर्सन हैज द चॉइस टू चूज, बट एक्चुअली वो चॉइस नहीं होता। द कोर्ट विल अपॉइंट द प्लीडर फॉर द एक्यूज्ड, ठीक है, एंड द पर्सन शुड, द एडवोकेट शुड बी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द advocate who are enrolled for the legal aid, and they will get this stipend also for this service. Who will get this stipend? Yes, who will get this stipend for serving as a lawyer?
Obviously, the person who is defending, the advocate, right? He is getting a stipend from the court or from the government for serving as a lawyer free of cost, right? So this is the defense. और डिफेंस के अंदर मेरे को व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन यू सो प्लीज राइट दीज वर्ड्स सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 303 we are clear that any person accused of an offense is entitled to get the services of a lawyer. Unlike the other functionaries under the code, such as police and the prosecutor, the advocate and pleader engaged in the task of defending the accused person are not in regular employment of the state. They are not the employee of the state government. Rather, they are just appointed for that purpose. ठीक है? Is it clear to you? जस्ट गिव मी अ सेकंड मैं आप लोगों के लिए डिफेंस काउंसिल के ऊपर कुछ राइटिंग मटेरियल है दिस इज आल्सो फ्रॉम द केल्टर ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जस्ट गिव मी अ सेकंड शेफाली आर यू विद अस शेफाली बेटा है ना अभी ठीक है शेफाली बेटा मैं आपको शेफाली मैं 2 शीट दे रही हूँ आपको डिफेंस काउंसिल पे ठीक है और बाकी प्रिजन अथॉरिटीज का भी मैं अभी आपको दे रही हूँ दिस इज द नेक्स्ट फंक्शनरीज हमारा आप ये क्लास ग्रुप पे या तो फॉरवर्ड कर दो और दिस वन इज ऑन दी पुलिस मैम अगर आप फ्लैश यूज करोगे तो फोटोज की क्वालिटी थोड़ी बेटर आएगी तो पढ़ने में आसानी होगी फ्लैश यूज करके मैंने यस करा मैम बेटा ये नहीं हो पा रहा है क्या रुको मैं एक बार और देखती हूँ उसको रुक जाओ अदर पुलिस एक्ट का मैं करके देखती हूँ अभी ये वाला देखो जरा जो अभी भेजा है मैम पहले वाला बेटर था पहले वाला बेटर था ओके बेटा मैंने आपको अराउंड 4 पेजेस का स्क्रीनशॉट शेयर करा है इसमें डिफरेंट फंक्शनरीज हैं डिफेंस है पुलिस है और प्रिजनर्स
और वी कैन से करेक्शनल अथॉरिटी है। आप लोगों ने चेक करा, कोर्ट का मैं आप लोगों को क्लास में ही करा चुकी हूँ, हिरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट का चार्ट दे चुकी हूँ, राइट? वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अब मैं आप लोगों को इसका ब्रीफ दे रही हूँ। डिफेंस काउंसिल के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू कवर 2 सेक्शन, one is 303 and 304. 303 put a mandate upon the court, he basically under the CRPC, the accused should have has the right to be represented by a lawyer, ठीक है? And 304 put a mandate upon the court where the court find that the accused is not coming with his lawyer or there is nobody to defend him. So, and the accused request the court and tell the court that he does not have the sufficient means to hire the service of a lawyer. Then in that situation, the court will give him a lawyer, and that is given under section 304, that is free legal aid under the CRPC. Is it fine to you? So this is the point which you need to cover under the next functionary, that is in this functionary, that is defense counsel. Now the next one is prison authority and correctional service personnel. ये वाला ओपन कर लीजिए, आपके इसी शीट पे जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसी में है। नोट्स क्या है? दिस इज बेसिकली द रीडिंग्स ऑफ फ्रॉम द केल का। मिला आप लोगों को डिफेंस प्रिजनर अथॉरिटी और करेक्शनल सर्विस प्रोवाइडर। Yes. Beta, please inform me. Have you got the content? Yes, ma'am. Okay. तो प्रिजन अथॉरिटी में बेटा बेसिकली कौन है? बेसिकली व्हेन द कोर्ट in during the trial, we all know that the end of the trial is either the acquittal or conviction. When the court convicted a person, then obviously the court has to send the person in prison or we can say in jail. ठीक है? तो एक तो वो वाली प्रिजन, वहां पे प्रिजन अथॉरिटीज का रोल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसीडिंग ऑल्सो the court will put the person, the court will give the accused in judicial custody, or there is a police custody also, that we will cover later on. But आपको जो आप लोगों ने टर्म सुना भी होगा, रिमांड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द टर्म रिमांड? पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, रिमांड। प्रदुल? पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो वो कोर्ट से रिमांड मांग लेती है कि उसको जुडिशियल कस्टडी की जगह पुलिस के जेल में भेज दिया जाए। हाँ, तो इसका मतलब उस टाइम पे भी व्हेन द पर्सन इज अरेस्टेड और उसके बाद इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट अंडर सेक्शन 167 to either send the accused into the police custody or in the judicial custody. ठीक है? तो एक तो वहां पे उसका रोल आ जाता है, ठीक है, करेक्शन और प्रिजन अथॉरिटीज एंड जेल का। And apart from that, prison authority, that means after the judgment or when the court pronounce the conviction, तो court जो है conviction के लिए भी accused को किसी prison authority, किसी जेल को देगी। जैसे दिल्ली की अगर कोई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है या रोहिणी कोर्ट है या साकेत है या ये जितने भी कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट established under the in the Delhi, they send the person in तिहाड़ जेल, ठीक है? तो वहां पे जो तिहाड़ जेल का वो इंचार्ज होंगे, उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि वी आर सेंडिंग सो एंड सो पर्सन इन सो एंड सो टर्म। उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिसे वारंट ऑफ वो देते हैं, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन होता है उसमें कि सो एंड सो पर्सन का डेट ऑफ कन्विक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका रिलीजिंग डेट ये है और इसको कैसा कन्फाइनमेंट है। तो वो सारी डिटेल जो होती है कि कैसे कन्विक्शन जो है रन करेगी, अगर वो मोर देन वन ऑफेंस में चार्ज है, कंकरेंट रन करेगी या कॉन्सिक्यूटिवली रन करेगी, तो all these details are given by the court when sending a person in the conviction or when send a person in for the prison, तो before the prison authority। तो ये सारे का सारा जो गिवन है बेटा, इसी में एक सेक्शन 360 भी आता है विच इज टॉकिंग अबाउट दी ये भी आप लोगों ने सुना होगा, रिलीज ऑन
अच्छा, कितने लोगों ने पैरोल, प्रोबेशन और बेल सुना है? बेल तो काफी लोगों ने सुना होगा। पैरोल और प्रोबेशन सुना है आप लोगों ने? हैव यू एवर हर्ड पैरोल एंड प्रोबेशन? अभी रिसेंटली किसी को पैरोल पे रिलीज करा है ना? किसको करा है? कौन है वो? हाँ, आर यू एबल टू हियर मी Yes, ma'am. स्टूडेंट? हाँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस था, ये नेट का इशू था कॉलेज में थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मैं आपको पैरोल होता है, पैरोल और बेल होता है, और प्रोबेशन क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज प्रोबेशन? इसी में जो मैंने आपको हैंडआउट शेयर करा है ना बेटा, इसी में सेक्शन 360 एंड 361 की बात हो रही है। इट टॉक्स अबाउट द रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड ऑन प्रोबेशन फॉर गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। ठीक है, तो ये क्या होता है प्रोबेशन पे रिलीज करना? और पैरोल तो जैसे हमें समझ में आ गया कि पैरोल पे रिलीज करना मीन्स टेम्परेरी रिलीज है, एंड इट इज एक्चुअली ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ द कन्विक्शन, है ना धनंजय? राइट। एंड हाँ, जैसे कि अगर मान लो किसी पर्सन को, किसी एक्यूज को इम्प्रिजनमेंट मिली है फॉर 5 ईयर या सपोज 3 ईयर्स का मिला है, बट उसमें एक कंडीशन डाला है कि ये पर्सन जो है अगर मान लीजिए गुड कंडक्ट रखता है और अच्छे से रहता है विद अदर इनमेट्स, तो ही कैन बी रिलीज 6 मंथ्स बिफोर। तो इस तरीके का जब रिलीज होता है, दैट इज दी प्रोबेशन, रिलीज ऑन प्रोबेशन फॉर गुड कंडक्ट एंड एडमोनिशन। पैरोल जैसे कि संजय दत्त के केस में इसने बोला था कि मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज हो हैं, कभी कभी, कभी फैमिली का कुछ रीजन दिया था, कभी कुछ और कुछ अपना किसी का वो बताया था कि मेरे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उनका पैसा लगा हुआ है, मुझे कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। तो कुछ कुछ इस तरीके के रीजन हो सकते हैं। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यस, फिर से टेक्निकल ग्लिच था बेटा, वाईफाई इशू, या यहाँ पे पता नहीं, थोड़ा नेट का इशू रहता ही है कॉलेज में। एनीवेज, तो पैरोल एंड बेल, बेल में क्या होता है एंड हाउ बेल इज डिफरेंट फ्रॉम द पैरोल? स्टूडेंट, व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि पैरोल में और बेल में क्या डिफरेंस है? एनीबडी, एनीवन?
Students, are you getting my voice? बेटा आप लोगों को मेरा वॉइस आ रहा है? यस मैम। मैंने एक्चुअली मैम नेट मोबाइल को इशू ऐड हो रहा है ऑफ तो करा है। वीडियो ऑफ कर लो। हाँ मैं वही कर रही हूँ, मैं मोबाइल से जो ज्वाइन करा है, ये कॉलेज के वाईफाई में कुछ कनेक्टिविटी इशू है। एनीवेज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं दोबारा से लैपटॉप से ज्वाइन कर लूंगी जब अटेंडेंस लूंगी, अभी के लिए सिर्फ सुन लो मुझे, ठीक है? तो बेटा पैरो available matter or not. Are you still getting my voice बेटा? नो मैम। हाँ ओके, अच्छा मैं दोबारा बोलती हूँ बेटा। बेलेबल जो बेल है दैट कैन बी बेल, हमें पता था कि ऑफेंसेस टू टाइप्स के हैं, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, हमने डेफिनेशन में कवर करा था, याद है आप लोगों को? बेलेबल एंड नॉन बेलेबल 2A में मैंने Yes, बताया था, है ना? तो अब बेटा वहां पे बेल जो होती है, हमें ये भी पता है एक और काइंड की होती है, दैट इज दी बेल बिफोर द अरेस्ट, दैट इज नोन एज एंटिसिपेटरी बेल, कि अरेस्ट नहीं हुआ है। जनरली हमें पता है कि बेल इज एन इंस्ट्रूमेंट द पर्पस ऑफ विच इज टू एंश्योर द फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल, right? It protects the right to liberty of an individual. So that means bail is usually after the arrest, but there is another kind of bail which can be possible even before the arrest, that is known as anticipatory bail. So bail का जो role है, that is primarily before the arrest, during the trial, during the investigation, but not after the conviction. Whereas parole is something which always come into the picture or come into the existence after the conviction order, after the sentence, after the pronouncement of the sentence in a trial. Right? Is it clear to you? बेटा आप लोगों को क्लियर हुआ है ये पॉइंट? मैम पैरोल और प्रोबेशन में बता दो एक बार। हाँ, पैरोल क्या होता है बेटा? पैरोल का मतलब यही है कि टेम्परेरी रिलीज कर रहे हैं, उसकी कन्विक्शन स्टार्ट हो गई है, व्हेन द कोर्ट सेंड द पर्सन इनटू द जेल, इन द जेल, और उसका कन्विक्शन स्टार्ट हो गया है, बट ड्यू टू सम रीजन, जैसे कि अगर मान लो किसी की फैमिली में भगवान ना करे कोई कैजुअलिटी हो जाए, या सपोज किसी के बेटे की शादी है, और somebody जैसे संजय दत्त के केस में उसने कहा था कि मेरे कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, दे हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी, और उनको वो लॉस हो जाएगा फाइनेंशियली, देन द कोर्ट रिलीज हिम ऑन पैरोल। मतलब सम रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए फॉर टेम्परेरी रिलीज of the accused. Or probation is something when the on after noticing the behavior or temperament of the accused, when the prison authority think कि नहीं ये पर्सन अच्छा है, इसने अच्छे से बिहेव करा है, हमें हेल्प करा है इन दी प्रिजन मैनेजमेंट एंड ऑल, और ये अच्छे से रहा है और बिल्कुल इसने पीस, और ही टर्न इनटू अ गुड पर्सन नाउ, तो when they request or तो court may release or the court can pass an order for releasing such person on the probation। और जैसे कि प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट 1958 है बेटा, इसमें जैसे कुछ पर्सन है, जैसे जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल के लिए हमें पता है कि 18 ईयर्स से बिलो है। द सेम वे प्रोबेशन के केस में कई बारी अगर किसी का एज बिलो है 21 ईयर, देन ही कैन बी रिलीज्ड good conduct पे on the because of the young age. So these are the ground for releasing an accused on probation or good conduct. ठीक है? Sukriti, am I clear to you now? Yes ma'am. Thank you बेटा। मैं आज के लिए, अच्छा अब मेरे को अभी टाइम है ना, अभी क्या टाइम हुआ है, लेट मी सी, इट्स 11:46। ठीक है, मैं आज इतना ही करेंगे। टुमारो वी विल कवर विद द प्रिजन सॉरी पुलिस। ठीक है, तो मैंने आज आपको डिफेंस करा दिया है। आई डिड विद यू दैट प्रिजन अथॉरिटी और करेक्शन अथॉरिटी,
डिफेंस हो और हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले ही हो गया था और क्रिमिनल कोर्ट्स, और वी आर लेफ्ट विद ओनली पुलिस नाउ. इज इट फाइन? बेटा एक सेकंड में अटेंडेंस शीट डाउनलोड करने की कोशिश करती हूँ. और हाँ बेटा, प्रिजन अथॉरिटीज में मैं सिर्फ इतना ही कराऊंगी, ज्यादा नहीं है हमारे को करना. इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत ही करना चाहते हैं, एक एक्ट है दैट इज द प्रिजनर एक्ट 1900 का है. ऑल्दो मुझे वो भी नहीं कराना है, मुझे सिर्फ मैंने आप लोगों को जितना हैंड आउट दिया है आपने देखा होगा 360 एंड 361. दीज आर दी टू प्रोविजन. अगर मेरा स्क्रीन शेयर मैं कर पाती तो मैं ये शेयर कर देती, बट वो भी नहीं हो पाएगा. तो आप लोग एक बार अपना बेयर एक्ट उठाओ, सेक्शन 360 एंड 361 देखिए बेटा. Let me try to join from the laptop, but हो नहीं पाएगा अभी, प्रॉब्लम है इसमें. Class, my voice. बेटा आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके, ठीक है धनंजय, just give me a second, let me share with you my screen. Problem I think. ओके, तो हमारा प्रिजन अथॉरिटी हो गया, ठीक है. और आई एम शोइंग यू सेक्शन 360 एंड 361. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. स्क्रीन विजिबल हो गया आपको? आर यू गेटिंग माई स्क्रीन? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई स्क्रीन? No, ma'am. Yes, ma'am. Now it is visible. बताइए प्लीज मुझे. Are you getting the content Bear Act on my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, dear students, please tell me. Are you getting this screen? Beta, please inform me. Shefali, okay. Please write in the chat box if you are getting. Can I assume कि हाँ आप लोगों को सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है ये स्क्रीन, ठीक है? Okay, order section 360 martial note says order to release on probation of good conduct or after admonition. तो ये this is something, ठीक है? According to this provision, any person who is when a person is not under 21 year of age is convicted of an offence punishable with fine only or imprisonment for a term of 7 years or less, or when any person under 21 year of age or any woman is convicted of an offence not punishable with death or ally or so and so
तो उसको जो रिलीज किया जाता है दैट रिलीज कम्स अंडर द प्रोबेशन एक्ट, ठीक है। Apart from that, this section 360 talks about the release of an accused on probation for good conduct and admonition, ठीक है। नाउ मेरे को आपको पुलिस वाला रह गया, दैट इज द पुलिस अथॉरिटी, and this is the last functionary, so that we will cover in the next class. Okay, now ready for your attendance.